Sentence 26. I am waiting for 2 hours. I'm waiting for 2 hours. बहुत सारे sentences में मैं अपने aspirants को, अपने students को ये बताता हूँ. I'm waiting for 2 hours is a sentence which is present continuous. I am waiting for 2 hours. And in present continuous, you must be knowing that उसमें टाइम फैक्टर नहीं दिया जाता. कब से हम वेट कर रहे हैं किसी का, वो उसमें नहीं दिया जाता. When did the work start? We do not know that. When the work started, we do not know that. In that case, I am waiting for 2 hours. Present continuous में for 2 hours जैसा टाइम फैक्टर नहीं आ सकता. तो किस में टाइम फैक्टर आ सकता है? इसका अगर हिंदी में आप मतलब निकालेंगे, आप निकाल चुके होंगे, मतलब मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ. तो ऐसा सेंटेंस जो समझाया जाता है, इट इज़ एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स in such a mundane way that it goes over heads. Very threadbare, and that should not be there. That doesn't stand to reason. I'm waiting for 2 hours. इसमें आप ये बताएं कि 2 घंटे से अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में चला जाता है. और प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में क्या आता है आप मुझे बताइए. तो वहाँ पर हम हैव और बीन का यूज़ करते हैं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी टाइम फैक्टर की तो मैं आराम से कह सकता हूँ आई एम टीचिंग यू. माफ़ कीजिए, आई एम टीचिंग यू. लेकिन अगर मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कब से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये कहना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 years और आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2017. पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर होगा वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं. पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. So it's easy to understand, it's easy to absorb, it's easy to keep in mind. Right? So let us move forward. Sentence 28. So I'm sorry, 26 and 27 comes up. I am trusting you. A sentence, it has a projection. A sentence attracts you. And attracts so hard that you just can't get away. I am trusting you. Good sounding sentence. Very euphonious sentence, isn't it? I am trusting you. एक अच्छी मधुर ध्वनि है इसके अंदर, लेकिन ध्वनि पे बिल्कुल मत जाइएगा. और आप देखिए कि I am trusting you क्या ये ग्रामर के रूल को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है? तो ग्रामर के रूल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो हमारा ये मैजिकल वैंड ये कह रहा है आई एम ट्रस्टिंग यू, इसमें कुछ गलत है. देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उनको प्रोग्रेसिव टेंस में यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज़ देम इन प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, एनी कंटिन्यूअस टेंस. सो इफ़ ट्रस्ट इज़ वन ऑफ देम वी आर नॉट गोना यूज़ इट इन कंटिन्यूअस टेंस. तो हम समझ गए कि हमारी गलतियाँ यहाँ पर क्या हैं. हम ट्रस्ट को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं. तो मैं यहाँ ट्रस्ट से ing हटा देता हूँ और मैं m को भी हटा देता हूँ और सेंटेंस बचता है ओनली विद 3 words एंड यू वुड हेल्प मी विद रीडिंग हियर आई ट्रस्ट यू सिंपल. आपका मतलब अगर कंटिन्यूस में भी है दैट इज़ नेगोशिएबल, नो प्रॉब्लम. इट इन्वॉल्व्स दैट मीनिंग टू. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंटिन्यूअस सेंस. You have a continuous sense on the mind, no problem. It is continuous. Even though we have changed, we have erased M here and we have eliminated ing form too. And I trust you, I love you, I believe you. Right? I consider you, I appreciate you, I dislike you, I like you, I own a car. We do not say I'm owning a car. I'm having a car. We don't say that. So, same way we do not use it in
progressive tense, which is also known as continuous tense. I trust you. Either you have a sense of continuity or you have a sense of present indefinite as a habit, whatever. In both cases, we have I trust you. Let's go to the next sentence. I'm going to meet with him. I'm going to meet with him. My dear friends, after meet, we do not use any preposition. So, no with. No with. Without with, you can use sentence, I'm going to meet him. I'm going to meet him. There are some dictionaries, some prestigious and authenticated dictionaries. They do claim that you can use meet with, but you can meet with in one case if you are going to have a longer discussion, a long discussion with somebody. You can say two parties are getting to know each other. They would have some time to know each other, right? So you can say principal is going to meet with the teachers for a long discussion. We can say that president is planning to meet with the prime minister for the upcoming event, whatever event is. You can say with me. But generally, when we do not really intend to have a longer association or longer involvement of somebody, and they want to discuss something related to their work, and it is going to take a long time. Until the long length of time is not involved and a deep discussion is not going to entail, we will not use with. Now I tell you what is the second situation, meet with. देखिए meet with का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी unpleasant situation से दो चार होते हैं. Unpleasant situation मैंने कहा, इसको नोट कर लीजिए. Unpleasant situation. Unpleasant situation का मतलब सीधा सा ये रहेगा कि आप समझिए कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ने कोई नया बिज़नेस शुरू किया और वो नया बिज़नेस अच्छा नहीं चला और उसको अच्छा उसका जो लोगों का सपोर्ट है वो नहीं मिल पाया, तो सेंटेंस कुछ ऐसे आप बना सकते हैं. सेंटेंस क्या बन रहा होगा, आइए देखते हैं एक बार. सेंटेंस को बनाते हैं, महेश स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स बट he met with bad response. He met with bad response. He met with bad demand. एक और सेंटेंस बना लेते हैं और देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं. The new emerging political party did not meet with a desired response from the voters. Did not meet with. So they had an unpleasant episode. They had an unpleasant treatment on the part of the voters. तो जो वोटर्स ने उनको बिल्कुल वोट नहीं दिया, या किसी कार मैन्युफैक्चरर की कार नहीं बिकती हैं, so the car manufacturer has met with a bad response from the buyers, right? So meet with a bad response, unpleasant response. You can use meet with freely. Next sentence comes up, and next sentence says, the students did nothing during complete period. The students did nothing during complete period. देखिए complete period से मतलब क्या है, during complete period से हमारा क्या मतलब है. क्या during complete period इसका मतलब is the speaker trying to say that हर मौके पर, हर बिंदु पर उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, हर बिंदु पर, at every point of time, during that time, whatever time it was, तो उन्होंने हर एक बिंदु पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं. तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो देखिए बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, देयर इज़ अ ग्लेयरिंग डिफरेंस. नथिंग ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड. इन ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड को आइए चेंज कर देते हैं, और ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड को आसानी से चेंज कर दीजिए. और बताइए आप यहाँ क्या लगा सकते हैं. यहाँ पे आप थ्रू आउट लगा सकते हैं, थ्रू आउट द पीरियड. तो यहाँ पर आपको थ्रू आउट द पीरियड का मतलब ये हुआ कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम,
whatever, as long as the period was being taken by the teacher, the students did not do anything. Students did nothing throughout the period. So as long as the period goes, at every point of time, the period, we can say throughout the period, instead of saying during complete period, right? So let's move forward. So please always distinguish between throughout and during. They both have different meaning, right? Let's move forward. और आप पहुंच गए हैं 30th पर. 30th question, I'm sorry, sentence कहता है work hard and you are success. Work hard and you are success. Work hard is okay sentence. Work hard and you are success. I'm not success, I am successful. I am not success, I am successful. So I am successful, please use the right part of speech, successful. So सक्सेस में मैंने फुल को और ऐड कर दिया है, सक्सेसफुल. सक्सेस नाउन है, नाउन की ज़रूरत वहाँ नहीं है. वी डोंट नीड नाउन हियर. On the contrary, we need adjective. So successful, right? We have finished with 30 sentences successfully, and I firmly believe, I trust that you all have understood the minute differences, and you must have delved deeper into the world of, into the ocean of grammar, and we have been successful to find some pearls of wisdom by successfully completing 30 sentences. So let us move forward with the next set of 5 sentences. Stay tuned.